So this is the next video for our GS related discussions, and this is related to governance. So I'll put it in the GS2 playlist folder. So सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे ये देखते हैं, increasing internet shutdown in India. So this is a topic that can be relevant from the mains perspective. 2019 and 2020 alone, and internet and the allied services remained suspended for more than 13,000 hours. And there were more than 160 plus instances of shutdown that were enforced throughout in different places. So basically, India का जो rank है globally when it comes to shutting down internet, it is the first. So India को माना जाता है और अब बुलाया जाता है the internet shutdown capital of the world. So somewhere around last month or so, there was this parliamentary standing committee on information and technology that was headed by Shashi Tharoor. They submitted a report titled Suspension of Telecom and Internet Services and its Impact. जहां पर उन्होंने ये बोला कि जो पैरामीटर्स हैं for internet shutdown, that should be clearly defined. There should be a robust mechanism अगर internet shutdown करना है. There should be a clear cut procedure. The parameters should be well defined. The committee said that ये जो frequent suspension होता है इन telecom services का and internet का, उससे लोगों की life and liberty affect हो रही है, and इस वजह से it creates a huge setback to the economy of the country. So there are certain reports. There is a report that says that there have been 550 internet shutdowns in India since 2012, and जिसमें से 50% of these shutdowns, more than 50% of these shutdowns were imposed after 2019. होता क्या है जनरली, ये जो shutdowns होते हैं इंटरनेट के, they are not explicit. The suspension orders are not publicly available. ऐसे सस्पेंशन ऑर्डर्स के बारे में जानने के लिए people have to file applications under the RTI, and then they are procured. So then they get to know about these suspension orders. So they get to know about the suspension order through media reports and through suspension orders that they are able to procure only after filing an RTI. Filing an application under the RTI. ये जो parliamentary standing committee थी that was led by Shashi Tharoor, they also noted that कोई centralized mechanism नहीं है जो एक database maintain करके रख सके about the internet shutdowns that were imposed throughout the country. जो largest shutdown हुआ है, the longest shutdown that we can say has been in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में सबसे लंबा internet shutdown हुआ था, and that was 552 days long. So this is a very long period, and when no internet or low speed 2G internet available था या फिर no internet, it was either no internet or 2G internet that was available, and ये impose किया गया था from 4th August 2019 to, and it was lifted completely only on 6th February 2020. So it's just 2021. So it was fully restored. See, Jammu and Kashmir mein, this was curtailed in August 2019, and it was fully restored only later on after 552 days. So in this context, we will see what were the highlights of the Anuradha Bhasin Judgement. So there are certain directives that the Supreme Court gave in the Anuradha Bhasin Judgement
But despite the Supreme Court's judgment, we'll see what those things are. Quickly, we'll go through that important points in that judgment. But despite those directions, despite the Supreme Court's judgment in the Anuradha Bhasin case, the number of internet shutdowns in India has increased, and in most of the cases, shutdown orders, as I said, are not published by the respective state governments. So, increasing instances, as I said, of internet shutdown has made India the internet shutdown capital of the world. So, shutdown is what we can call an intentional disruption of internet-based communications that makes them inaccessible or unavailable for a specific population, location, or type of access. Usually internet shutdown एक attempt होता है state का to control the flow of information within a region by preventing people from accessing the internet. अब ये जो अनुराधा भसीन जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड that this remember this highlight of the these two things. As far as the Anuradha Bhasin judgment is concerned, it can be important in substantiating answers when we talk about internet shutdowns specifically. So Supreme Court said that the freedom of speech and expression through the medium of internet is a fundamental right under Article 19(1)(a). यानी कि जो freedom of speech and expression through internet के माध्यम से is very much a part of Article 19(1)(a), that is the right to freedom of speech and expression. So through the internet, through the medium of internet, is also a part of Article 19(1)(a). अगर आप restrictions लगा रहे हैं उस पर, then you have to follow the principles of proportionality. You have to follow the reasonable restrictions that are mentioned in Article 19 Clause 2. So हमें पता है Article 19(1)(a) is the freedom of speech and expression in general. Article 19(2) puts restrictions on them, provides for reasonable restrictions that can be imposed. And what are the grounds on which those reasonable restrictions can be imposed? They can be imposed in the interests of, as you might be aware, sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offense. So these are the reasonable restrictions. These are the grounds on which those restrictions can be placed on the exercise of the right that has been conferred by Article 19(1)(a). यहाँ पर ये भी बोला गया कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट के माध्यम से भी तो ट्रेड एंड कॉमर्स कैरी आउट किया जाता है. सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑलरेडी गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19(1)(g). 19 clause 1 sub clause G, it is guaranteed to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. That is 19(1)(g). अब इंटरनेट के माध्यम से भी ये किया जा सकता है. तो अगर आप इंटरनेट पर रोक लगा रहे हैं, you are basically putting a restriction on that right, because freedom of trade and commerce through internet is also a constitutionally protected right under Article 19(1)(g). अब ये जो principles of proportionality है, we will discuss that. This is important. The theory of proportionality. I will just tell you what this is in a while. इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे. And 19(1)(g) पर कैसे restrictions लगाए जा सकते हैं? The restrictions are mentioned under Article 19 Clause 6. So उस पर restrictions लगाए जा सकते हैं in the interest of general public. It was said that this temporary suspension of telecom services rule 2017, ये जो rule है temporary suspension of telecom services, public emergency or public services rules of 2017 are the only procedures that have to be followed. This is the only procedure that has to be followed to suspend internet services. अगर internet services suspend करने भी हैं, तो that has to be done as per these rules. और ये रूल्स याद रखिएगा, ये जो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज वाले रूल्स हैं, दिस
have been framed by the government. These have been framed by the government on the basis of the powers conferred to them by the Indian Telegraph Act of 1885. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 में एक सेक्शन 7 है जिसके थ्रू ये इनके पास ये पावर्स आते हैं इस तरीके के रूल्स फ्रेम करने के लिए. उन पावर्स ये जो पावर्स यहाँ पर कॉन्फर्ड हैं टू द गवर्नमेंट by the Indian Telegraph Act, उसको यूज करके they framed these rules, that is a temporary suspension of telecom rules 2017. And the court said कि अगर आपको सस्पेंड करना है इंटरनेट तब आप इनको यूज करेंगे. Only this procedure has to be followed. The procedure that has been mentioned here, that has to be followed, that too in the occurrence of a public emergency. अगर public emergency हो तभी, or for the interest, or for it to be in the interest of public safety. तो अगर कोई इमरजेंसी है या पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में है तभी आप इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं, दैट टू इन रूल्स के तहत. वन थिंग दैट वी कैन नोट हियर इज ये जो 2017 के रूल्स हैं, ये जो टेलीकॉम सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स हैं, उसके हिसाब से द कंपीटेंट अथॉरिटी टू इशू एन ऑर्डर टू सस्पेंड द इंटरनेट आर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द कंपीटेंट अथॉरिटी टू इशू एन ऑर्डर टू सस्पेंड द इंटरनेट. यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में जहां पर प्रायर डायरेक्शन ऑब्टेन करना फीजिबल नहीं है, so in that case the orders can be issued by an officer not below the rank of a joint secretary to the government of India. को ऑथराइज किया है यूनियन होम सेक्रेटरी ने या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी ने. The competent authority to issue an order to suspend internet from the state government side is the secretary to the state government in charge of the home department. Again, home department का जो secretary to the state government in charge. So home ministry of the state, home department of the state, right? So state government की तरफ से by the secretary to the state government in charge of the home department. So ये जो डिटेल्स हैं थोड़े लग सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल हो गया है, बट ये डिटेल्स ऐसे हैं कि we have to go through them once and keep these in mind. Like एक बार once we go through them, it will stay with us. We'll know कि क्या इसमें competent authority, if we come across a statement, let's say in prelims, we'll have an idea. We'll not try and mug it up here, right? We'll try and go through this information that we have, and जितना हमें जरूरत है that we will try and keep in mind. तो ये जो orders होंगे to suspend the internet, that must be forwarded to review committee of the central and state government. So ये अगर suspend करने का कोई order दिया जा रहा है तो that order has to go to this review committee. Central and state government का review committee होता है, so it goes to that. अब review committee of the central government, we will just go through it कि बस ये याद रखिएगा, ये जो orders हैं to suspend the internet must be forwarded to this review committee. अब रिव्यू कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है? सेंट्रल लेवल पर एक रिव्यू कमेटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रिव्यू कमेटी होता है. सो अकॉर्डिंगली द ऑर्डर्स आर फॉरवर्डेड टू द रिव्यू कमेटी. तो वी सॉ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर इशू किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है. सो अकॉर्डिंगली इट गोज टू द रिव्यू कमेटी. एक रिव्यू कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हर ऑर्डर जो इंटरनेट सस्पेंड करने के लिए जो भी ऑर्डर होगा दैट has to be forwarded to this review committee. अब review committee में कौन-कौन है, that much detail we don't have to know, but we'll just go through it once ताकि एक idea रहे कि क्या है. So review committee of the central government consists of cabinet secretary as the chairman. So the cabinet secretary will be the chairman of this review committee. That we can keep in mind. Cabinet secretary will be the chairman of this review committee. जो central government का review committee होगा, review committee of the central government,
उसका जो चेयरमैन होगा दैट विल बी द कैबिनेट सेक्रेटरी. Then there will be another secretary to the government of India in charge legal affairs as a member. Then there will be secretary to the government department of telecommunications as a member. So secretary legal affairs and secretary department of telecommunications will be there as members in this review committee of the central government. Then there is the review committee of the state governments. Review committee of the state government में chief secretary will be the chairman or the chairperson. The chief secretary would be the chairperson, and the other members would be secretary law or legal in charge, legal affairs, as that person will be present as a member. And then there will be secretary to the state government other than home secretary as a member. So these are just certain details. यहाँ ये भी reiterate किया गया कि जो सस्पेंशन है इंटरनेट का वो आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं. एज पर दीज 2017 टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स, इट इज नॉट परमिसिबल टू सस्पेंड इंटरनेट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो किया जा सकता है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. सो इट कैन बी ओनली फॉर अ रीजनेबल ड्यूरेशन and periodic review should be done. And एक और चीज ये बोली गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्डर जो इंटरनेट सस्पेंड करने के लिए दिया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. एंड ये जो ऑर्डर्स होंगे दैट द गवर्नमेंट गिव्स, द कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट शुड पब्लिश ऑल द ऑर्डर्स दैट आर बीइंग given out, the orders that are issued for suspension of internet. The court said that the government should publish that ताकि इसको challenge किया जा सके. अगर ये basically ये जो order है, this is subject to judicial review. This order that is suspending the internet is subject to judicial review, so that order should be available. The government should publish that order so that कोई अगर उसको challenge करना चाहे तो कर सकता है, because these orders are subject to judicial review, right? अब हम देख लेंगे quickly what is the theory of proportionality. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पर I told you beginning में यहाँ पर कि यहाँ पर court said in the Anuradha Bhasin case कि restrictions on the internet have to follow the principles of proportionality. अब ये principles of proportionality क्या है that we have to understand. So ये theory of proportionality or the principle of proportionality was actually developed by the German Federal Constitutional Court. So this basically lays down a four-pronged test. तो एक four-pronged test है to test the proportionality of any decision. कोई भी measure अगर लिया जा रहा है that has to go through this test of proportionality. This is a theory by the German Federal Constitutional Court. And यहाँ पर एक four-pronged test है. कोई भी अगर measure लिया जा रहा है by the government, तो that has to go through this four-pronged test. एक तो legitimate goal test. Legitimate goal test क्या है? अगर government एक measure ले रहा है, the government is taking some measure, ठीक है? और ये जो measure है, इस measure के कारण rights of the individuals affect हो रहे हैं. They are restricting, these measures are restricting the rights of the individual. Then the legitimate goal test is whether this measure that restricts the right serves a legitimate goal or not. क्या इस right को restrict करने से या इन rights को restrict करने से कोई legitimate genuine goal achieve हो रहा है या नहीं. So that is legitimate goal test. Then secondly, there is this rational connection stage. This is the second of the four-pronged test. Rational connection stage का मतलब ये है कि government जो measure ले रहा है, यहाँ पर legitimate goal test में एक goal define कर दिया गया है कि हाँ ये measure से ये goal achieve हो रहा है. अब ये rational connection stage में ये तय किया जाता है कि
क्या ये जो मेजर है, ये जो मेजर लिया जा रहा है, will it help in achieving this legitimate goal? The goal has to be legitimate. Whether this will achieve in whether this will help in achieving the legitimate goal. Then comes the necessity test. Necessity test is basically कि ठीक है, आपके पास ये आपको एक गोल अचीव करना है, फाइन, पर क्या आप कोई और तरीका अपना सकते थे जो इक्वली इफेक्टिव होगा इस गोल को अचीव करने के लिए? क्या आप एक ऐसा मेजर अब ले सकते थे जिसको दैट कुड हैव बीन लेसर रिस्ट्रिक्टिव, जहां पे राइट्स कर्टेल करने की जरूरत नहीं पड़े? सो वेदर देयर एग्जिस्टेड एन इक्वली effective but lesser restrictive alternate remedy, that is the necessity test. Then there is the fourth one, that is balancing stage. अब यहाँ पर बेसिकली ठीक है, गवर्नमेंट ने ये मेजर तो ले लिया, they wanted to achieve a goal, government took this measure or this measure was taken, but did this measure have a disproportionate impact on the right holder? क्या आपने जरूरत से ज्यादा राइट्स कर्टेल कर दिए या इसका जरूरत से ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है लोगों पर? दैट इज द बैलेंसिंग स्टेज. लेट अस से आप राइट टू इंटरनेट कट कर रहे हैं, इफ यू आर सस्पेंडिंग द राइट टू यू आर सस्पेंडिंग द इंटरनेट सर्विसेज, दैट इज अ मेजर दैट द गवर्नमेंट टेक्स, बट उस मेजर की वजह से लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कर्टेल हो रहा है. सो दैट यू कैन से इज एक्चुअली आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मे बी यू वांट टू अचीव कि कम्युनल हार्मनी हो उस जगह पे, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, इसलिए समथिंग फॉर दैट, सम दैट काइंड ऑफ गोल इज देयर. बट आपके इस मेजर की वजह से लोगों का जो ट्रेड है वो इमेंसली इफेक्ट हो रहा है, ट्रेड करने का जो फ्रीडम है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड, ट्रेड थ्रू इंटरनेट. तो गवर्नमेंट, so that is what is going to be tested in the balancing stage. अब क्या कोई और तरीका था? क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई और तरीका नहीं अपना सकते थे? That is what is it. That is one example. So this is the four-pronged test. तो बेसिकली इसी टेस्ट को कंसिडर करते हुए, this considering this test of reasonableness and this test of proportionality, Supreme Court did not accept the government's contention of complete ban on telecommunication, including internet. Court said that the government should actually consider other options. बाकी options consider करिए, complete ban मत करिए. They should consider other options or alternatives under Article 19(2). 19(2) में reasonable restrictions are given. So you ensure it in such a way that the freedom of speech and expression is affected in the least possible way. Now, from the main's perspective, we have to understand what is it that the internet shutdown can do. Like, what is the impact of internet shutdowns? So, try and understand the impact of internet shutdowns. सबसे पहली बात तो it can impact fundamental rights. जैसे कि पहले ही बोल दिया गया था कि देखिए यहाँ पर ये जो राइट है, राइट टू यूज द इंटरनेट, कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. Freedom of speech and expression through the medium of internet is also a fundamental right under Article 19(1)(g), and also, like I said before, freedom of trade and commerce through the medium of internet is also constitutionally protected. तो अगर आप इंटरनेट को सस्पेंड कर दे रहे हैं, so you are actually impacting that fundamental right. Majority of the Indians use internet on their mobile phone for carrying out daily activities, right? And trade and commerce is one important aspect of it. 19(1)(g) is an important aspect. So if you are suspending, if the government suspends internet, it actually impacts the fundamental right under Article 19(1)(g), under Article 19(1)(a). Right? Now, internet suspension, देखिए क्या किया जाता है, कभी कभी इंटरनेट सस्पेंशन इसलिए भी कर दिया जाता है, इट्स यूज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ताकि प्रोटेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. एंड इस तरीके से एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अगेन affected, and it also impacts the freedom to gather peacefully. That internet can be used to
disseminate or to spread information, and through that people can actually come together and assemble peaceably without arms. That is very much permissible under Article 19 1B. So then again, that is impacted. That fundamental right is also impacted here. The next way that internet shutdown, see, one thing is the internet shutdown के जो orders होते हैं, गवर्नमेंट उसको जनरली पब्लिश नहीं करता है. गवर्नमेंट डज नॉट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, कि ये जो ऑर्डर्स हैं उसको लोग अगर पीपल वांट टू get these orders, they are having to resort to the RTI to get the orders. So basically government is actually not publishing these orders, and that was actually something that was mandated in the Anuradha Bhasin case, in the Anuradha Bhasin judgment, कि the government has to publish the orders for internet suspension. So this not only is a reflection of arbitrary action by the government, or it gives, see, if the order is not published, it is more arbitrary in nature. There is more arbitrariness in that. And also it is a non-compliance of those telecom suspension rules that we saw of 2017, wherein they are required to publish these orders, and those telecom suspension rules were framed under the Telegraph Act. राइट एंड ये चीज देखिए, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इंटरनेट शटडाउन्स अगर होते हैं इन जनरल, तो उनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. जैसे बिजनेसेस शट डाउन हो सकते हैं, देयर कुड बी लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड चिल्ड्रन कुड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स. नाउ दैट एवरीथिंग हैज shifted to the online mode, especially in the context of the COVID-19 pandemic, अगर अभी कहीं पर इंटरनेट शटडाउन होता है, so then that becomes problematic. कोई रीजन में अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, बेसिकली पीपल डिपेंड ऑन इंटरनेट टू स्टे इन टच विद फैमिली, फ्रेंड्स, to create local communities of interest, report public information, to hold institutions accountable. There are a variety of uses of the internet, and depriving people of this is depriving them of a lot of things. Depriving people of internet in today's times is equivalent to depriving them of multiple services and multiple different things. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लाइक वी सेड, कि ऑर्डर पब्लिश नहीं होता है. दैट अगेन क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाता है. बेसिकली अगर इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जा रहा है एंड दैट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, देन गवर्नमेंट इज बेसिकली फ्री फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द जुडिशरी. Right, it is free from the scrutiny of judicial review, as it was said in the Anuradha Bhasin case कि जो भी orders होंगे of suspending internet, that is subject to judicial review. पर वो judicial review से तभी subject कर पाएंगे effectively if there is an order that they can actually review. अब अगर केस फाइल कर भी रहा है कोई एंड तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा आप हमें लाके ऑर्डर दिखाइए कि कहाँ पे, व्हाट इज द ऑर्डर फॉर इंटरनेट सस्पेंशन. एंड फिर ये एंटायर प्रोसेस जो है डिले हो जाता है, and government can get away with illegal restrictions without any published order. So publishing of the order is one very important aspect that has to be taken care of. The government has to publish orders. If at all it has to suspend internet. Anyhow, that is the thing that we can mention in the way forward, or what needs to be done part. Now, government not complying or not releasing these internet suspension orders basically is also equivalent to a contempt of the Supreme Court, because सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि आपको ऑर्डर रिलीज करना ही है. यू हैव टू पब्लिश द ऑर्डर, एंड नॉन पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स इज बेसिकली equivalent to non-compliance of the judgment of the Supreme Court, and that is basically a case of contempt that the government is doing. So basically there is also a lack of awareness on important judgments of the Supreme Court. अब अगर कोई comply नहीं कर रहा है, the government is not complying with the judgments of the Supreme Court, it leads to further lack of awareness among the employees of the state government and the central government. एक example के तौर पर मेघालय government, उनके an RTI was filed about this internet suspension order. तो वहां पर मेघालय गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स सेड कि उनको नहीं मालूम है ऐसे कोई गाइडलाइंस के बारे में दैट
द अनुराधा भसीन केस में किस टाइप के क्या गाइडलाइंस लाई गई थी, दे सेड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो इस तरीके का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दैट कैन बी detrimental. That is basically लैक ऑफ अवेयरनेस का एक और एग्जाम्पल, वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ये है कि न्यूज में भी था पहले कि दिस श्रेया सिंगल केस में सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को तो स्क्रैप कर दिया गया था. तो सेक्शन 66A अगर आपको पता होगा तो दैट वाज a section that basically gave the government power to arrest any individual for posting offensive or menacing online posts, and ये बिना डिस्कशन के उस टाइम पे पास हो गया था. एंड देन आफ्टर दिस वाज स्क्रैप्ड, सेक्शन 66A जो है वो स्क्रैप कर दिया गया था. पर पुलिस उसके बाद भी, बावजूद इसके स्क्रैपिंग के, पुलिस रिपीटेडली फाइल्ड केसेस अंडर सेक्शन 66A डिस्पाइट इट बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. उनको पता नहीं था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. सो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली, अगर you know that people should be aware of it. The employees of the central government and the state government have to be aware of it, और इसके लिए एक statutory recognition देना चाहिए to the guidelines that have been issued by the Supreme Court. Okay, now the other thing is very important is the impact that it can have on the economy. बार बार अगर internet suspension किया जा रहा है, see the repeated use of internet suspensions in India are on a rise, and इसकी वजह से Indian economy जो है impact हुई है. अब ये कहा जाता है 2020 में इंडियन इकोनॉमी सफर्ड लॉसेस ऑफ समवेयर अराउंड 2.8 बिलियन डॉलर्स, US dollars, due to due to separate 129 separate instances of internet suspension. So 2.8 billion US dollars का नुकसान हो गया. That is a huge loss that occurred due to separate instances of internet suspension. अब क्या किया जा सकता है इसमें? What is the way forward? We'll end with looking at the way forward. We've seen the problems. We now look at the way forward. See, एक तो ये चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रहा है उसको, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है. और इसके लिए क्या किया जा सकता है? स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दीजिए, एक लॉ लाइए उस इफेक्ट में. लेजिस्लेचर शुड ब्रिंग अ लॉ, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अ लॉ to so a statutory recognition should be given to the important guidelines that the Supreme Court issues. Whatever guidelines Supreme Court issues from time to time, it is imperative to provide statutory recognition to those guidelines. और जितनी भी चीजें क्लैरिफाई की गई थी इन द अनुराधा भसीन केस, दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी अगर इंटरनेट सस्पेंशंस हो भी रहे हैं तो उसके ऑर्डर्स जो हैं पब्लिश करना जरूरी है. द गवर्नमेंट शुड पब्लिश दोज ऑर्डर्स ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन. अब इंडिया हैज एन इमेंस डिजिटल potential. Like we have India has a huge potential. Digitally हम काफी आगे बढ़ चुके हैं. So there is a huge potential that digital India has. So the government has to actually strictly comply. So there is a requirement that the government strictly complies with the guidelines of the Supreme Court, and so that we get rid of this title or this tag that we have got as in internet shutdown capital of the world. India has got this title of the internet shutdown capital of the world. So to get rid of this title, it is important that the government complies with the guidelines that have been laid down by the Supreme Court, especially the guidelines in the Anuradha Bhasin case.